Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Learn Skills. In this video I will teach you step by step guide of the Payoneer account creation via JazzCash easily without linking any banking details or IBAN number. याद रखें जिस डिटेल्स और CNC पर आपका JazzCash अकाउंट बना है वही डिटेल्स आप Payoneer को देंगे तो आपका JazzCash के जरिए Payoneer अकाउंट बनेगा। अगर अभी तक आपका JazzCash का अकाउंट नहीं बना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से JazzCash अकाउंट बनाने की वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द अकाउंट क्रिएशन प्रोसीजर। Step 1. Open the JazzCash app. Click on My Account. Then enter your secret PIN. If you don't have a Payoneer option in your home dashboard, then click on Delete option. For example, if you don't have a Payoneer option, you can slide up and down. You can see here Payoneer option, add them. Customally you can edit all the options and remove and plus add. Click on the save. You can see the Payoneer option is here. My Payoneer account is already linked, so I want to delink it. Then I teach you how to make a Payoneer account via JazzCash. Click on My Account for delink the Payoneer account. Click on the link card and other accounts. I did this. Click on the cross and then click on the yes delink. Congratulations, my Payoneer account is successfully delinked. So click on the Payoneer account, Payoneer option. Then click on the new Payoneer account. Yes. Wait for the loading. After the loading, the Payoneer sign up option is shown. अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट करें, अगर आपका ज़ाती अकाउंट बनाना है तो इंडिविजुअल क्लिक करके द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करें। सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, फर्स्ट नेम, देन सेकंड नेम। ये मैं अपने भाई का अकाउंट बना रहा हूँ, फिलहाल मेरा तो अपना है ज़ाती अकाउंट। टू टाइम आपने सेम जीमेल एड्रेस एंटर करना है, जीमेल आईडी जो भी है आप। Then enter your correct date of birth. Then click on next, filling your personal details. Then next to enter your contact details. यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट है, पाकिस्तान सेलेक्ट करें और enter your सर्टिफिकेट नंबर। आपका जो शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है आप बिल्कुल सेम वही एड्रेस होना चाहिए। After this, enter your more address. It's optional, you can skip it. Then next is आप जिप कोड के लिए आप गूगल पर आप अपनी सिटी का नेम लिखकर जिप कोड फाइंड कर सकते हैं। Like you can search on the Google postal and zip code of your exact city. Then next, enter your phone number which is active. Active mean which is you currently used. फोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई।
After this, next, click on the next. While creating your password, you can enter alphanumeric keys like hashtag $. सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. Enter your ID number. यहाँ पर आपने उर्दू ज़ुबान में नाम लिखना है. Click on the next. After this, the JazzCash automatically provides you a IBAN number. Then again enter your CMIC details. And tick mark the both options. After this, your application is reviewed in 2 or 3 days. Then next you can send or receive the payments. उम्मीद है कि आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. मज़ीद इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल लर्न स्किल्स सब्सक्राइब कर दें. आपका शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.